Hello everyone, I am MD.M. I hope you guys are fine and doing well. So today we will continue our video of the poem A Legend of Northland. Today we'll go through stanza-wise description. So let us start now. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell you. So before I go through the description, let me write the meaning of difficult words. Okay, so your first word is what exactly is the meaning of legend? देखो legend का जो मतलब है ना, यहाँ पे legend का जो मतलब होता है ये होता है तुम्हें ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी. अभी इस सेंस में जो हम लोग legend का जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है? ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी. Traditional story. And the second one is your look. Away, away means scare. Very far away, very far. Away, away. Long ago, or very far away. Very far away. Very far away. And the next word is your Northland. Northland is a place. Northland क्या है आपका? तो Northland जो है ये है आपका a place located in the far north of Europe. क्या है आपका? It is a place. It is a place. It is a place located in the far north of Europe. North of Europe. तो नॉर्थलैंड जो है ये क्या है हमारा? एक प्लेस है जो कि तुम्हें कहाँ है? लोकेटेड इन द फार नॉर्थ ऑफ यूरोप में. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज योर आवर्स ऑफ डे. Hours of the day. Of the day means daylight hours. Okay, and the next one is your cannot sleep through them. So cannot sleep throughout the night. Cannot sleep them through. इसका सीधा मतलब होता है आपको cannot sleep throughout the night.
cannot sleep throughout the night. And the next word is your hardness. Hardness means tie, बांधना किसी चीज को. And the next word is your reindeer. Reindeer, animal residing in the far north. Residing in the far north. And the next one is your sledges. Sledges, animals drawn carriage. Animals drawn carriage. Carriage used for transportation, over snow. Okay, and the next one is furry. Made of fur. And the next one is your curious. Means strange. और इसके बाद एक वर्ड और भी है विच इज़ योर टिस. TIS है ना, टिस है, और इसको पढ़ा जाता है इट इज़. ठीक है, इट इज़. टिस जो वर्ड है आपका, इसको क्या पढ़ा जाता है. चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं. ये जो वर्ड्स लिखा गया है, पहला वर्ड है हमारा लिजेंड. लिजेंड जो होता है, देखो लिजेंड का तो बहुत सारे मतलब होते हैं. लिजेंड का एक मतलब ये भी होता है जो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जो चीज़ें हमेशा चलती जाती हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी के लिए यूज़ किया गया है. एंड अवे मतलब बहुत पहले जो चीज़ होता है. ठीक है, ये और लाइक उसके बाद कह रहा है आवर्स ऑफ द डे मीन्स डे लाइट आवर्स. एंड कैन नॉट स्लीप थ्रू देम मीन्स कैन नॉट स्लीप थ्रू आउट नाइट. कैन नॉट स्लीप थ्रू देम का मतलब होता है क्या, कैन नॉट स्लीप थ्रू आउट नाइट. हार्नेस मतलब टाई, बांधना. रेंडियर, एनिमल रिसाइडिंग इन द फार नॉर्थ. ठीक है, तो जो मतलब कहाँ रहता है वो एनिमल जो कि नॉर्थलैंड में मिलता है. ठीक है ना. और स्लेजेस ये होता है, देखो ये जो होता है एनिमल ड्रॉन कैरेज होता है, जिसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है. इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ओवर स्नो. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज योर फरी. फरी का सिंपल मतलब होता है कि मेड ऑफ फर. एंड लाइक एक चीज़ और भी है, जैसे कहा गया था आपको अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. तो व्हाट इज नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड इज अ प्लेस लोकेटेड इन द फार नॉर्थ ऑफ यूरोप. एंड यहाँ पे एक वर्ड आपको और भी यूज़ किया गया, दैट इज योर टिस. टिस का मतलब होता है दिस इट इज. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. नेक्स्ट we'll discuss in our next video. Till the time, take care of yourself.